with the Cetaphil Brightness Refresh Toner. ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है और पोर्स को भी टाइटन करता है. It is very important to also moisturize the lips. I'm using a lip balm. आप कोई भी lip balm यूज कर सकते हैं और कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट के लिए लिप्स के ऊपर इसे छोड़ दीजिए. इसके बाद आई एम यूजिंग द सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये लोशन हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही काम करता है और बेनिफिशियल है. हल्के से इसको फेस में आप मसाज करिए. आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आई ऑलवेज लाइक टू यूज a skin roller because this helps in the circulation along with making the skin very supple. This is very good for the skin and works as a relaxing therapy. This also helps in the lymphatic drainage. तो जितना भी फेस पे पफीनेस है वो सारी सेटल हो जाती है. The Swiss Beauty Eye Serum Patch are very good for under eye hydration. ये पैचेस आप लगाकर और 10 मिनट तक छोड़ दीजिए. Till you're doing your eye makeup, this will help in hydrating the under eyes very well. I'm starting the eye prep by using the Too Faced Concealer. This acts as a very good base for the eye, corrects the discoloration, and becomes a good base for the eyeshadow to become long lasting. Now you can take the translucent powder, उसको अच्छे से अपने बैक ऑफ द हैंड में स्प्रेड कर लीजिए ताकि क्लाउड्स ना बने और आईज के ऊपर डैब कर दीजिए. ये कोई भी आईज के ऊपर जितनी भी स्ट्रीक्स होंगी और जितने भी क्रीजेस होंगे वो सेटल हो जाएंगे. After I have done the eye prep, I'm taking this Urban Decay eyeshadow palette. इसमें क्रीम बेस भी है और पाउडर बेस भी है. So first I'm taking this very earthy color, which is little cream base. ये मैं transition area में deposit कर रही हूँ, so that it gives a crease and some depth to the eyes. Now I'm taking a slightly darker brown and depositing it to the outer corners, going into the crease line. Again, I want to keep it very matte because shine or glitter during the day look can look little overpowering. Now I'm taking the Natasha Denona warm palette and using the colors which are very bright and mellow for the center lip as well as the eyebrow bone. अब आप देख सकते हैं कि जो कलर्स की सारी ट्रांजिशन है, it is all blending very well and it is looking like one family of colors. इसमें कोई भी कलर jarring नहीं है, कोई भी कलर out of place नहीं लग रहा है for a day look. After I have given it this muted palette, I'm taking the Swiss Beauty color eyeshadow palette and giving it a pop of pink and little orange since her outfit has those colors. Put it onto the crease. And I'm taking the orange and putting it more towards the transition area. And I'm taking a very light color, almost in the family of whites, and putting it as a highlight only under the brow bone. इससे आईज एकदम हाईलाइट हो जाती है. Make sure that the eyeshadows are blend properly. So you can go in circular motions and patting motions ताकि कहीं भी कोई पैच ना दिखे. For the eyebrows, I'm using this pencil eyebrow designer by Essence. Make sure that it is not jet black but more dark brown ताकि look जो है थोड़ी soft आए
और आईब्रोज को एनहांस भी करें। You will take the arch and go upwards and then go down towards the shape. The inside, make sure they are feather-like strokes in vertical motion. Take the spoolie brush and just brush the eyebrows in an upward direction. Then remove the serum patches. I'm using the Dalba First Spray Serum. ये पूरे फेस पे आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए. This gives the skin a very moist and a dewy feel. Wait for the skin to dry. Let the serum spray dry. And now you can see how it has given a very natural glow to the skin. For the dry skin, I'm using the Bobbi Brown Vitamin E Enriched Primer. Then apply it. First, apply it on the skin. Massage it into the skin in a spreading motion. This makes the skin very hydrated and gives a good base for the foundation and the base to stick. ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है स्किन प्रेप में, जिसमें आपको स्किन को सेरम स्प्रे से हाइड्रेट करना है, स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, और उसके बाद एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लगाना है. As you can see, for all the dark circles underneath, for the bluish black pigmentation, we use an orange color corrector. I'm using the cream base from MAC in a very patting and dabbing motion. This will neutralize the pigmentation and the dark circles. आप हमेशा अपने आईज के इस एरिया से शुरू करिए एंड गो अपवर्ड्स सो दैट योर करेक्टर सिट्स इन द राइट प्लेस. अगर आप आईज के बहुत क्लोज शुरू करेंगे तो फिर आपका करेक्टर आईज के अंदर जाएगा. इसीलिए आप हमेशा आई क्रीज से शुरू करिए and build it upwards. After we have neutralized the skin, I'm taking the NARS concealer. This is in the color ginger, and applying it all over the corrector. Then I'm taking a sponge, a beauty blender, and just patting it. और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप बिल्ड कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट विद लेस, क्योंकि वो बिल्डेबल है. अगर ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले लिया है फिर उसको क्लीन करने में आपको ज्यादा स्टेप्स लगेंगे. सो टेक लेस एंड देन मेक इट मोर बिल्डेबल. आफ्टर वी हैव डन द कंसीलिंग, इट इज बेटर टू वेट. लेट द कंसीलर सेटल इन बिफोर यू अप्लाई योर ट्रांसलूसेंट पाउडर. So wait for 20 seconds, then apply the translucent powder. I'm using the Huda Beauty translucent powder in the color banana. I'm taking the translucent powder, rubbing it and then gently patting it all over the face. इससे आपका मेकअप सेटल हो जाएगा और जो भी फाइन लाइंस और क्रीजेस हैं वो थोड़ा सेटल हो जाएगा. आफ्टर यू हैव डन योर अंडर आईज, अगर आप देखो आईज के नीचे थोड़ा क्रीजेस आ रहे हैं तो आप एक स्पंज लीजिए, उसको हल्के से पैट करिए. टेक द सेम पाउडर पफ जिसमें आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है और उसको हल्के से पैट करिए. देन यू विल टेक अ माइक्रो ब्लेडिंग स्टिक और जहां जहां क्रीजेस हैं उसको आप जेंटली स्मूदन आउट करिए. And this will definitely lessen the appearance of the cracks and the creases. After you have cleaned up, क्योंकि basically यहाँ पर क्या होता है, जो product deposit हो जाता है, that is what leads to the creasing. After you have cleaned up with this micro blending stick, आप फिर से powder लीजिए और हल्का सा पैक कर दीजिए. Now you can see
how the creasing has definitely reduced. I'm using the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. इसको आप अपने फाउंडेशन से पहले, जब आपने कंसीलर पाउडर लगा लिया है, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं. Just gently spray it all over the face. So ये सारे आपके पाउडर्स और क्रीम्स मेल्ट हो जाएंगे, and this is going to give you more long lasting base. You can take the foundation. Here I'm using the Dio Backstage. Shade is the 1M. Take 1 drop of the foundation और उसको अच्छे से आप स्टिफल कर लीजिए, मतलब अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए डेंस ब्रश के साथ, एंड देन जस्ट पैट इट ऑल ओवर द फेस. इससे आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्मूथ रहेगी और इवनली स्प्रेड हो जाएगी. और आप देख लीजिए एक ड्रॉप से कितनी सारी फाउंडेशन जो है वो बन जाती है. So you don't need to take too much foundation because foundation is basically just to give a even skin tone. Foundation does not do the correction or the concealing. That we have done with the corrector and the concealer. Now I've taken the Kiko Milano Sculpting Touch Cream Contour Stick और देखिए कैसे under the jaw and under the cheek लगाया है, starting from the earlobe towards the center. उसको नीचे drag नहीं करना है. Then you just blend it with a brush. There should be no streaks and no patches showing. And this will immediately give you a very sculpted and a snatched, uplifted look. अब आप देख सकते हैं the difference between this side and this side. How this side looks more uplifted and there is a sharpness to the face. For the nose, I'm taking the same contour stick and start from the bridge of the nose towards the inner eyebrows. यहाँ से शुरू करेंगे तो आपका नोज की काउंटोरिंग ब्लेंडेड लगेगी. अगर मैं बीच से शुरू करती हूँ, so it does not look very well blended and natural. So you will take the inner corner from the eyebrow, go all the way down and spread it sideways. So इससे nose snatched या पतला लगता है. Under the snout, ताकि ये थोड़ा uplifted लगे. Then I'm taking a liquid blush on from She Glam and applying it from the apple of the cheeks, going to the tip of the nose, and then blending it. This gives that very flushed look for the day. Fresh, glowy, spring, fresh look. Then you take a powder blush of the same family of color and उसको उसके ऊपर press कर दीजिए. इससे आपका blush on lock हो जाता है and the pigment stands out. So we are doing colored eyes today since it's a day fresh look. I'm taking this rosette color and putting it all over the upper lid. पहले आप पूरा upper lid पे लगा दीजिए. Don't worry कि अगर वो बहुत smooth नहीं आ रहा है because इसको हमने आई shadow से smudge करना है. Put it all over. Just open this. After you have applied this, also look up, apply it under your eyelid all the way to the tear duct. So I have given it a base of top and bottom. Now with the round thick brush you take the same colored eyeshadow, उसका extra निकाल दीजिए and then just smudge the eyeliner so that it gives it a very soft look और जितने भी वो rough edges हैं वो clear हो जाएंगे. And the same thing you do to the lower lid. After you have put the colored liner and sealed it with a color eyeshadow, I'm taking a black color waterproof kajal pencil. Take out the excess ताकि कोई grains ना आए. And I'm first going to do the tight line. Just look up.
tightline the eyes with the black kohl. I'm taking a gel eyeliner. उसको आप ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए so that you don't get any grains. And then look now, stamp to the outer corner and slowly going in. पहले आप outer corner करिए. And then to the from the inside to the middle. इसको एकदम clean look देने के लिए take a angled brush, dip it in your concealer and just give it a cut here and blend it. This will clean out the edges and any residue. Taking the Volumax waterproof mascara, and you can use this eyelash stencil so that the mascara doesn't spread on your upper lid. And always go from down to up in squiggly motions to get the maximum deposit of mascara on your lashes. To add depth to the lips, you can take a bronzer with a slightly softer brush and just apply it under the lip line all around, giving slight depth to the lips. On the cupid's bow, over the lip line. This will give the lips slightly fuller and a plumper look. Then you take a sharpened lip pencil. I'm taking the color brown and start with the bottom, outline it, the cupid's bow, and then join the outer corner to the inner corner. Fill in the sides with the same lip pencil. Kiko Milano matte, lasting matte wheel color in a nudish pink tone and just applying it on the lips. Then you can take a clear lip gloss and apply it on the centers. Take a thin one and brush your lower lashes horizontally. Seal the eyebrows. I'm taking a clear mascara or an eyebrow gel, taking it on a spoolie, taking off all the excess and sealing the eyebrows. इसको अगर आप धीरे धीरे सिंगल करके करेंगे, it will almost give a very Botox look to the eyebrows. To make the makeup stay and not lose the gloss, first I use the setting spray. Now I'm taking the L'Oreal setting spray, the setting mist, and sealing the makeup. Avoid the eye area, otherwise उससे eyebrows बहुत sticky हो जाते हैं. So what I like to do after the full makeup is done, अगर मुझे लगे कि मेरे को थोड़ी highlight या brightness चाहिए, I just add a lighter color highlight on the highlight points. So this instantly lifts up and brightens the makeup for me. Even though I have done the makeup, but you can just pat it and press it in. उससे आपको वो एक brightness आ जाएगी face पे.
Catch part 2 to see the ultimate transition from day vibes to night glam. Like, subscribe, and come back for the reveal.